Hi parents, this is SP Zawalkar from Creative English School, Bid Road, Nipani, Aurangabad. Parents, we are learning very beautifully the ideal rules of parenting. Today we are coming to concluding for this rule. Today we have to learn two important things about ideal parenting, good parenting. What those two rules are. Number one, have unconditional love with your children. बच्चों से बिल्कुल अच्छा प्यार करो. उसका नतीजा क्या हो जाएगा आपको पता चलेगा. मदर इज द ओशन ऑफ लव, काइंडनेस एंड अफेक्शन. सो शी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फैमिली as far as having the love with the children. So both mother and father should have unconditional love with their wards, with their children. Love makes very incredible effect on the mind of the children. Love motivates them, love inspires them, and love heightens their thoughts and wisdom. Love enhances their learning capacity also. Love enhance or increase their learning capacity. Then if you love to your children, then they themselves also have the respect, honor and love about the parents. If you are frequently scolding upon them, they will get irritated, their mindset will be disturbed. So you should be very kind and affectionate to them. You should have tremendous amount of love about your own children. Then finally, these very important things, at the particular occasion, you should hug your children. And it is the law, it is the educational science, it is pedagogy. Explain us how many times parents should hug a child. How something they do good, call them very good. And as a matter of fun, I tell that I used to tell that hug a child for 12 times in a day. Mean it not like that in the morning 1, 2, 3, 4 and up to 12. No. At the particular occasion, if they do something good, to motivate them, to appreciate them, call them and put their hair on nearby our heart. So it gives a strong power to them. A good affection amount is transferred from your heart to their mind also. So, finally, call them by kind names, by nicknames, which Are Bablu, E Beta, Maji Rani, Maza Sonu, like this you should have to call. My lad, my laddie. In this manner, you should have to motivate them by giving unconditional love to your children. Friends, dear parents, last important rule is the keep promises. About the keep promises, no, if you say that you assure to your word that I will do this thing for you, मैं आपके लिए ये चीज करूंगा, तो किसी सूरत में वो करना चाहिए. देखूंगा हुईंगी नहीं हुईंगी ऐसा बोलने के बाद ठीक है, मगर जिस दिन तुम बोलेंगे कि ये चीज मैं करूंगा तो उस दिन किसी सूरत में करना चाहिए. एंड दैट इज व्हाट वी से दी कीप द प्रॉमिसेस. मेरे लाइफ की एक बात बोल देता हूं मैं. घर में मेरी पोती है वेदिका जवड़कर. एक दिन उसने मुझे नोटबुक लाने के लिए, और स्पेशली सी इज मच इंटरेस्टेड इन ड्राइंग की नोटबुक लाने के लिए बोला था. तो
मैं दिन भर के काम के चक्कर में भूल गया, सुबह बोले हुआ काम शाम तक के भूल गए. बट बाय 9:45 I remembered that कि वेदिका जवळकर or my granda told me to ask, she asked me to bring notebook, drawing notebook. तो फिर मैं जाते जाते उस्मानपुरा चले गया और मेरा दोस्त का स्टेशनरी का दुकान था, वो बंद कर रहा था. मैं बोला भाई ठहरो ठहरो, मुझे क्या करने का है, मेरी पोती के लिए जो है तो ड्राइंग बुक लेने की है. अरे सर इतने रात को नहीं बोला. आई हैव अश्योर्ड हर, आई हैव प्रॉमिस हर कि मैं उसको नोटबुक ला के दे दूंगा. उसने खोला, मैंने अच्छी क्वालिटी की नोटबुक ली और घर पे लेकर गया. घर पे जाते जाते 10:30 बजे का वक्त हो गया, मगर शी वॉज वेटिंग एट द डोर. और पहली बेल में उसने दरवाजा खोला तो मैं बोला क्यों वेदू तू सोया नहीं बेटा? नहीं वो मुझे पक्का लग रहा था कि आप हाँ बोले ना तो कोई चीज करते हो, तो आज तुम मुझे ड्राइंग बुक लाके देने वाले हैं, ये मेरे को मन को लग रहा था. क्योंकि इफ यू वन्स प्रॉमिस नो यू फुलफिल द प्रॉमिस. आणि मग ती नोटबुक दिल्यानंतर तिने 10:30 ते 11:30 पर्यंत इतकं सुंदर चित्र काढत बसली. तेव्हा मुलांना प्रॉमिसेस देणं आणि त्याला कंटिन्यू करणं, कीप करणं, फुलफिल करणं हे खूप महत्वाचं असतं. अदरवाईज समटाइम पेरेंट्स इग्नोर promises and that result like anything. So you should have to try to get the positive result. To get the positive result, you should keep your promises given to your children. Friends, this is very beautiful end of today about ideal parenting. Have nice and great day.